Okay, so let us begin with this. First of all, my name is Master harshal dalvi and आज का जो वीडियो है is specially for this the physics sums and उसमें भी specially for the students of Sanpada, the students of Turba and बहुत से मुझे request है कि sir make some video on the concept of the sums for physics, the sum in the science. So this is what I am making and आज का जो topic है this topic is somewhat related. I hope you remember this as lesson number one. Lesson number one, gravitation, and this is from the SSC board. I repeat, this is from the SSC board. But आज जो मैं सिखाने वाला हूँ that is equally useful for the ICSE board also, like 7th standard, 8th standard, and also useful for the Maharashtra board 9th standard and 10th standard. So what I am doing today is not just for any specific board, but I will do it for the physics sum. Okay, let us begin with this. I am holding this book in the hand because I will teach as per this, but I will make the formula more versatile in use. So chalu karte hain abhi. Okay, and yes, do see whole video. And yes, one more thing. नेक्स्ट टाइम आज मैं बस कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ एंड नेक्स्ट टाइम श्योरली आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी सम फ्रॉम दिस लेसन नंबर 1. सो लेट अस बिगिन विद दिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्रेविटेशनल, दिस इज अ लेसन एंड व्हाट आई विल से इज ये लेसन की अगर आपको सम करना है तो जस्ट 5 फॉर्मूला आने चाहिए. 5 फॉर्मूला विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेसन फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ द सम. आई रिपीट, अगर ये लेसन की आपको सम सॉल्व करना है तो जस्ट 5 फॉर्मूला आपको आना चाहिए. दे आर मोर देन इनफ आई विल से. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द केपलर्स. केपलर के 3 रूल्स है जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछे गए इन दिस 5-6 ईयर एंड 3 मार्क्स के लिए भी आते हैं, सिंगल मार्क्स के लिए भी आते हैं. सो प्लीज डू दिस is t square upon the r cube is equal to the constant, and ये sum I think 1 या 2 बार पूछा गया in this test book in the comparison in the ratio type. And then second is most important, this is I think so this is the most important formula in this whole lesson. मतलब there's something ये lesson की शान है. This f is equal to big G m1 m2 upon the d square. So आई थिंक फर्स्ट फॉर्मूले में एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. वन इज द टाइम एंड अनदर वन व्हाट वी हैव इज योर डिस्टेंस टेकन. सो लेट मी सी दिस. सो ये फॉर्मूले में थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा कि यस क्या है ये सब. ओके, द फोर्स जो हमें निकालना है विच इज नेवर बीन अ कांस्टेंट. बिग जी का वैल्यू सबको पता है, वो एक कांस्टेंट है एंड दैट इज अ ग्रेविटेशनल आई विल से डिजिट जो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है. देन वी हैव द m2, मे बी अ वन ऑब्जेक्ट, मे बी अ वन प्लैनेट. वी हैव द m1 एंड m2, मतलब एक प्लैनेट मीन्स यू कैन डू द कंपैरिजन ऑफ द. समटाइम हम लोग पूछते हैं कि जस्ट लाइक यहाँ पे एक सम है ऑफ द महेंद्रा का, तो 1 पर्सन एंड अनदर पर्सन m1 m2 में यू कैन टेक अ प्लैनेट जस्ट लाइक योर अर्थ और द मून, योर सन और द योर मून, कुछ भी तुम लोग ले सकते हैं. m1 m2 आर 2 ऑब्जेक्ट एंड देन योर d स्क्वायर एंड यू विल सी बहुत जगह r स्क्वायर भी लिखा है. सो ये दोनों में क्या फर्क है. व्हेन वी हैव समवॉट अ प्लैनेट लाइक, तो प्लैनेट में व्हेन वी से दिस इज द रेडियस एंड वी टेक दैट एज अ r स्क्वायर, बट ये डिस्टेंस भी तो हुआ ना. सो एज पर दिस फॉर्मूला वी राइट योर d स्क्वायर एंड सेम फॉर्मूला यहाँ पे. So next formula is small g is equal to big G upon big M and upon this r square. Remember one thing, एक झोल जो हमेशा होता है g लिखते हो, small g big G दोनों में क्या फर्क है. बिग जी पूरे दुनिया में ग्रेविटेशनल का जो फोर्स है वो बोलता है कि कांस्टेंट है, एंड स्मॉल जी ऑन दिस अर्थ इज 8.9. आई रिपीट इज sorry 9.8 and this is on the earth only. and ये कैसे मिला, if you want to check this, ये कैसे मिला, तो जो बिग जी है उसका वैल्यू लिखो, अर्थ का जो मास है वो लिखो एंड देन अ डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करो, यू श्योरली गेट दिस. एंड ये सॉल्यूशन बहुत से लोगों को पता नहीं कहाँ पे, तो आई विल जस्ट से कि पेज नंबर 8 चेक आउट दिस. पेज नंबर 8 यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया एंड एग्जैक्ट what is the value of the small g has been given. So I will just say कि yes ये बहुत सही है. After this
कोई फॉर्मूला मुझे ये लेसन में पसंद है तो दिस इज अ स्मॉल जी, मतलब इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट इफ यू डोंट हैव द नॉलेज वेयर दिस 9.8 इज कमिंग, तो बिग जी कैसा है वो भी समझ में नहीं आएगा. तो आई विल जस्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फॉर्मूला हुआ, एंड व्हाट आई सेड इज द 5 फॉर्मूला आर इंपॉर्टेंट. सो दिस आर द 3 फॉर्मूला. लेट अस सी आवर फोर्थ फॉर्मूला इज बहुत वर्सेटाइल है, बहुत, मतलब no matter you are in 6, no matter you are in 7, no matter you are in 8, no matter you are in 9 standard, 10 standard, no matter any of your any board, ये फॉर्मूला बहुत सही है. ओके, W is equal to first of all let me see, ये लेसन नंबर 1 में दिया, बट आई विल सजेस्ट वन मोर फॉर्मूला, मतलब W is equal to your F is equal to your MA is equal to your MG, I will say MG. ओके, ये फॉर्मूला सबको पता है, F is equal to M है, बहुत बार देखे. एंड देन W is equal to mg, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है. नाउ MG में क्या फर्क है? अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया तो यू कैन राइट G, बिकॉज वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा एक्ट होता है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्मूला एवर व्हाट आई हैव सीन. यू कैन कनेक्ट दिस, यू कैन कनेक्ट दिस, मतलब ये 4 से तुम लोग 2-3 फॉर्मूला इजीली बना सकते हो. एंड देन यस ये क्या है वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये वेट, योर फोर्स, योर मास, स्मॉल g इज योर ग्रेविटी 9.8, एंड देन ए का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता, वो इट डिपेंड्स व्हाट द कंडीशन इज. एंड देन दैट्स ऑल फाइन. एंड ये आई विल से दिस, इसको किधर तो देखा हुआ लगता है. If you see this was in the 9th standard में, if you see कहाँ पे तो एक डायग्राम है, and you will find अरे ये दिया है ग्राफ का डायग्राम था. if you remember in 9th standard there was a graph like this, and you have to find the area by using a different tree formula, and then you get something. तो वो 3 फॉर्मूला ना, उसमें बस तुम लोग को एक चीज करने का, जिधर A है ना उधर G लिखने का, एंड देर इज वन टाइम, तो वो कैंसिल करने का एक कुछ तो है उसमें, यू हैव टू कैंसिल दैट एंड यू विल गेट दिस, श्योरली यू विल गेट दिस. सो ये 3 फॉर्मूला है. V is equal to GT, S is equal to half GT, then your V square is equal to your 2GS. अगेन ये लेसन बहुत से लोग यस एक और झोल है, जस्ट लाइक स्मॉल g, V में भी झोल है. कभी कभी हम बोलते हैं व्हाट इज V? V is a velocity. If you see a lesson number 5 heat, उसमें V क्या है? उसमें V is been given the volume, and then जैसे next lesson चालू होता है V वापस change, तो what is that V? तो उसमें भी V है, उसमें भी U है, then that is the distance somewhere between the from your object, your lens, your image, and हर एक lesson में V change होता है. तो let me say you, when you are in mechanics, V मतलब velocity होता है. Condition apply, 2 types of velocity, means your initial velocity means uv. अरे yes, again और एक झोल में, this is a one more झोल कि what is u and v याद कैसे रखेंगे. तो I will say ABCD जब तुम लोग बोलते हो पहला क्या आता है, u या v, u v w x. ओके, u v. तो अगर u पहला आता है तो pick that u as your initial velocity and v बाद में आता है, that maybe नहीं है, that is your final velocity. So that's all. And then this is how it works, a velocity, a small gravity, a time taken, s. ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट ये अलग अलग लेसन के. दिस इज फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड का जो 3 फॉर्मूला विच आई सेड, बट इन दिस ग्रेविटी के लेसन में हम सबका भेल बना रहे हैं. एंड इट्स रियली नाइस व्हेन यू आर यूजिंग दिस, व्हेन यू आर यूजिंग दिस, हर एक. एंड दिस आई विल टेल यू, ये पहला 11th स्टैंडर्ड में था, कैपलर लॉ. ये हम लोग को आई थिंक सो ये पोर्शन जो अभी चेंज हुआ, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड ये 3rd ईयर ऑफ दिस पोर्शन हैड चेंज. एंड पहला ये नहीं था, पहला ये बिल्कुल नहीं था. एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन, ये फर्स्ट लेसन नहीं था. पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट लेसन 3 साल पहले. तो आई विल से अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, मीन्स इफ आई सी द अरेंजमेंट ऑफ दिस बुक एंड इट्स रियली अ नाइस, अच्छा लगा मुझे ये अपडेट देख के. ओके, कमिंग बैक टू लास्ट फॉर्मूला एंड लास्ट फॉर्मूला से एक बात याद रखो, लास्ट लेसन में भी सेम फॉर्मूला. ओके, इफ यू सी दिस, escape velocity is equal to the whole root of 2 big G big M upon your big R. Now I will show you something.
your lesson number 10, your lesson number 10. This is your lesson number 10. I think ये rocket देख के तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. This is your lesson number 10. And same formula, if you see this page number 141, escape velocity is equal to big root of this 2gm upon u r. Same formula, कुछ फर्क नहीं. So if you're doing lesson number 1, किधर तो लेसन नंबर 10 में तुम लोगों को फायदा है. एंड इफ यू सी यहाँ पे भी वैल्यू वही है. बिग जी का वैल्यू यहाँ पे 6.67, बिग एम दैट इज ऑफ द अर्थ एंड देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये सब यहाँ पे दिए. तो इफ यू आर डूइंग लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 10 में उसका फायदा है. इट विल नॉट गो वेस्ट. बहुत से लोगों को लगता है अरे ये क्या है, ये इसका पार्ट नहीं है. यस, ये इसका पार्ट नहीं है. इट्स समथिंग विच कम्स आफ्टर द फ्री फॉल. सो आई विल से यस, उसका पार्ट नहीं है. बट लेसन नंबर 10 में उसका फायदा. एंड डोंट इग्नोर दिस बिकॉज ये आया है. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 1. 5 फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ये पूरा एक सेट है. सो आई विल से दिस 5 फॉर्मूला आर इम्पोर्टेंट. एंड देन दिस इज एक्स्ट्रा, बट ये 10th लेसन में यूज होता है. ओके, नाउ दिस आर समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर दिस लेसन, दैट इज योर मैकेनिक्स एंड योर ग्रेविटी. बट what I will say is ये तो हो गया. बट अगर तुम लोग को बेसिक नहीं पता तो how you can do this. So I will just say बेसिक में speed is equal to distance upon time, velocity is equal to displacement upon time, and ये तो मैंने अभी बोला. This total energy is equal to potential energy plus your kinetic energy and the units. So first when I was in school मैं बहुत अटेम्प्ट करता था, ये प्रॉब्लम्स बहुत अटेम्प्ट करता. समवेयर आई वाज गेटिंग रॉन्ग आंसर. अरे क्या हो रहा है ये, फॉर्मूला सही है, फीलिंग सही है, देन ऑल्सो आई एम गेटिंग रॉन्ग आंसर. तो मेरा एक बार ध्यान गया, अरे यूनिट्स. समटाइम क्या होता है, कैलकुलेट दिस इन सेकेंड्स, एंड वो दिया रहता है इन डेज. तो हम डेज को लेके मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी श्योरली गेट अ रॉन्ग आंसर बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट अ डे, कितना आवर्स, कितना मिनट, कितना सेकेंड और कितना पूछा गया है उसमें. सो ये हो गया टाइम का जोल. एंड व्हेन इट बिकम्स योर वेट में भी यू हैव टू सी वेदर इट्स इन ग्राम और इट्स इन केजी. एंड अगर वो सॅटिस्फाइंग वे नाही हुआ तो कन्वर्ट करना होगा. सो सर्वांना नम्र विनंती आहे का युनिट्स वरती लक्ष द्या प्लीज. बघा की तो एम आहे का, यो के एम आहे, यो जी आहे का, के जी आहे, सेकेंड आहे का, मिनट है. प्लीज सी दिस आर माइनर थिंग्स जो हम लीव करते हैं. एंड देन अरे आंसर आ रहा नहीं. एंड सम आर रियली स्कोरिंग मैन. जिसको अगर 11th 12th में साइंस लेना है तो अभी तुम लोगों को क्या है, मीन्स अगर 40 मार्क्स का पेपर है, समवेयर 6, 7, 8 मार्क्स का कुछ सम आता है. बट इफ यू आर गोइंग इन 11th 12th तो 40 में से 10, 15, 20 मार्क का भी सम हो सकता है. एंड इफ यू आर गोइंग एंट्रेंस एग्जाम तो उधर थियरी नहीं, उधर आधा सम से, आधे से ज्यादा सम से. सो दिस आर ऑल योर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लेसन नंबर 1 ऑफ योर एसएससी बोर्ड. एंड नॉट जस्ट एसएससी बोर्ड, आई विल से नॉट जस्ट महाराष्ट्र बोर्ड. ये हर बोर्ड को यूजफुल है. इफ यू आर सीइंग समथिंग साइंस, इफ यू आर सीइंग समथिंग मैकेनिक्स, तो आई थिंक यू दिस एंड देन योर दिस फॉर्मूला. अगर तुम लोग जी की जगह ए लिखते हो तो दिस आर रियली यूजफुल फॉर्मूला. सो दिस इज ऑल. एंड यस, डू फॉलो दिस पेज बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम. That is page number 15. Page number 15. Yes, and there is my one concept जो मैं हमेशा बोलता हूँ. If you are reading something in physics, I think last video में भी मैंने बोला, connect your logic with physics. सब कुछ सिंपल है. So imagine, let us pick one of the sum in this. Let us see your first one. An object takes a 5 seconds to reach ground from the height of the 5 meter on the planet. So I will say when you are reading the sum, see what is given, see क्या फाइंड आउट करना है. बट इससे पहला सम को इमेजिन करो, उसका डायग्राम ड्रॉ करो. बिकॉज इफ यू आर ड्रॉइंग द डायग्राम तो तुम लोग को कंसेप्ट समझ में आएगा. यस, ये बॉल ऊपर जा रहा है तो इनिशियल कितना होगा, फाइनल कितना होगा. एंड अगर वो बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो चेंज होगा. मीन्स व्हाट वी आर सीइंग, ऊपर जाके 0 होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे जाके किधर तो रुकेगा एंड तब 0 होगा. सो आई थिंक द डायग्राम आर नेसेसरी इन दिस. एंड जब रेशो की बात आती है, ये सम कभी पूछा नहीं है द रेशो, अरे ए इसका आधा है, बी उसका ज्यादा है तो क्या होगा.
तो आई विल से ये साल आ सकता है. एंड यस, देयर आर मेनी थिंग्स टू टॉक, but ये video is specially for only and only explaining the formula and the useful tricks for lesson number 1 of this is gravity. And specially again I'm saying ये मैं सांगपाड़ा के जो स्टूडेंट्स है एंड तुरबा के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए कर रहा हूँ. एंड यस, लॉकडाउन है, let us help each other and do share this video. लॉकडाउन में हेल्प चाहिए बिकॉज सी स्कूल्स में टीचर बहुत अच्छे, दे आर ओल्ड बट एक्सपीरियंस बहुत है. बट जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे कि जूम, ये सब सबके लिए नए. वी आर टीचिंग इन द स्कूल्स एंड यस यंग टीचर्स, तो वी आर फैमिलियर. अभी आप बताओ कि हर एक ऐप आपने भी यूज किया, मैंने भी यूज किया, बट व्हाट अबाउट द टीचर्स हु आर टीचिंग फ्रॉम योर 20 years, फ्रॉम द 30 years? उन लोग उतने अच्छे से ऑपरेट कर नहीं पा रहे. मतलब टाइम लगेगा, दे विल श्योरली डू देयर बेस्ट, but time lagega. But still that time let us do for them, or let us do for all the students. So it's really been nice. Okay, so if you have any problem you can just comment. काही जर विचारायचं असेल तुम्हाला या लेसन बद्दल, नाही तर कोणताही लेसन from this 1 to 10, what we have is a 1 to 10 lesson. You can surely ask anything of this in the comment section. And see, next video mein I will surely take the sums of this lesson. And if I will wait for kya comments aate means kaun sa lesson next chahiye, because in this 10 lesson mujhe lesson number 1 bahut pasand hai. lesson number 2 is also nice. lesson number 5 ये हम लोग को 10 साल पहले था 10th standard में. 10 साल में ये lesson नहीं देखने ही नहीं मिलेगा आपको. Hopes is my one of the favorite. Then what we have is the lesson number 9, कार्बन कंपाउंड्स. उसमें तो बहुत मजा आएगा बिकॉज IUPAC नेम अगेन इट वाज इन द 11th 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री जो तुम लोग को अभी है. एंड देन दिस इज लेसन नंबर 6 7 9th स्टैंडर्ड में भी था. देन व्हेन यू टॉक अबाउट लेसन नंबर 3 4 ये भी 9th स्टैंडर्ड में था. बट आई थिंक हीट इज समथिंग न्यू, कार्बन इज समथिंग न्यू, पीरियोडिक इज समथिंग न्यू फॉर दिस. सो श्योरली इफ यू वांट टू हैव समथिंग कि सर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए एंड समथिंग, it's something easy man, surely I will do. Lockdown है उसका use करो man, use your talent and don't waste your time. And let us see what happens. Best of luck for you all and do subscribe this channel for next video. And yes, again next video आपला solution वरती असेल या lesson मध्ये जेवढी sum आहेत exercise मध्ये. And yes, again I'm saying next video is specially for the solution of this sum of the lesson number 1. Mechanics is one of my favorite. And that's all for today. Let us see next time. Bye from my side.